I hope you all enjoyed the morning session of the Tathastu, and now we are on to very interesting academic session, the international seminar. Sufi poets and saints. This is in keeping with our broader theme on of the festival, that's mystical trail. And we're focusing on mysticism here, which, of course, mysticism is beyond boundaries in any framework. And India is known as that land of spirituality, of mysticism. This sense of divine, it carves a unique path for each mystic, and there's so many mystics who've walked on this land. And concurring with the diversity of mysticism, the Department of History has organized this seminar, international seminar, in collaboration with the Research Center of Janki Devi Memorial College. And the event brings together experts from various fields who will offer us an intellectual understanding of mysticism. Not only does the mystical tradition contribute to culture, but also it sculpts the socio-political milieu. Through this seminar, we aspire to enlighten our students regarding the influence and intervention of Sufism in shaping the past. We have a very distinguished panel, and our faculty, Dr. Devendra will introduce the panel to you. She's the chair. That includes introducing Sangeet, Swang and Nautanki in Europe and America. His ancestors helped to create the theatrical tradition of Ras in the courts of Nawab Wajid Ali Shah of Awadh in the 19th century. He has given more than 1,000 performances across the world. In 2021, he was the recipient of the 150,000 Hewlett 50 Arts Commission, which is the largest ever commission in folk and traditional theatre in the US. As part of the commission, he will create a woman-centered production called Princess Nautanki. Interesting. Which will premiere in San Francisco in 2024. Professor Sharma has held visiting professorships at the University of Oxford, the University of London School of Oriental and African Studies, Columbia University, UC Berkeley, and Film and Television Institute of India, Pune. He was a fellow of the University of Southern California in Los Angeles, my old university. That is another point of connection between us. In 2010, he was invited by the world-famous Théâtre du Soleil in Paris to train French actors in Swang-Nautanki. Professor Sharma was the creative consultant to United Nations Program on HIV/AIDS in India and Johns Hopkins University. In 2012, he collaborated with Devendra, the famous writer, to create a musical Nautanki Hanumanji Ramayana, which premiered at Prithvi Theatre in Mumbai. This Nautanki completed 100 shows in August 2018. He assisted Shyam Benegal in the film Zubeda, and in 2014, he acted in Shyam Benegal's directed TV series Samvidhan. His recent article was published in University of Hawaii's Asian Theatre Journal, and his forthcoming book titled Nautanki, the Musical Theatre of India, will be published by Bloomsbury, London in 2023. With this introduction, which barely touches the multifarious career of Professor Sharma, I invite him to present his talk.
Thank you very much for giving me this platform. वैसे भी हिंदुस्तानी और अंग्रेजी दोनों बोलो तो चलेगा ना? Yes, sir. नौटंकी कलाकार अंग्रेजी में बोलना अजीब सा लगता है, बट ये अगर कुछ समझ में आके बताना, एंड बीच बीच में मिक्स करते रहेंगे क्योंकि अमेरिका में रहेंगे थोड़ी आदत तो पड़ेगी अंग्रेजी बोलने। So, Swang-Nautanki. Let's go to the next slide. Jamaica. Yes, of course, I'm there. So, first we have to know what is Nautanki, because people have different kind of lot of different ideas about Nautanki. I know that students. First of all, I'm very glad that I'm talking to students and they are at least looking at me, not their cell phones. Very interesting. Thank you. Or there are some students who are in the research center, right? Yes, sir. Who are they? Very good. Did you attend one of my sessions? Yes, sir. Who attended that? Yes. That's why they are familiar faces. Can somebody tell what I told you about Nautanki? Whatever, it could be wrong. Do not worry about that. I'll correct if there's something wrong. But we did discuss about Nautanki, right? Do you remember anything? Say something. Yeah? Sir, about the swang, you talked about that people, men especially, dress as women and they play on the stage, Right? which is called swang. Swang, huh? So there are different meanings of swang also, not only Nautanki, right? अभी तो नौटंकी ही होगी ना, क्या नौटंकी लगा रखी है? And I discuss the photo of Bipasha Basu in one of my friends' movies, that Omkara, right? Yes. So Bipasha Basu, Bidi Jalai Lo. Most people tell me that is Nautanki. Well, that is not Nautanki. Nautanki is an opera form, right? जैसे हम वेस्टर्न ओपेरा सुनते हैं ना, वो आ करके जो गाते हैं, right? Nautanki is the Indian version of that, actually, right? And it was called Swang earlier. Swang is the older name. It's an operatic tradition, which means that if you see that Hollywood movie, La La Land, right? Something like that, that is exactly a Nautanki. Exactly, there's no difference. Or Broadway shows, right? Have you ever seen any Broadway shows like Hamilton that came recently? Anything? No? Singing in the Rain, Purane Wale? Fiddler on the Roof? No. Right? Yeah. But they know about the names, right? They are Nautanki, which means that the dialogues are sung, not spoken. But there's also not like Chetan Anand's Heer Ranjha. Have you seen that movie? Chetan Anand, Devanand's elder brother? Right? अभी तो मेरी gaze उधर है, but yes, thank you. So in that movie, they're even like, even the dialogues are in poetry. And they're not singing it, but they're just saying it. That would be a little boring. And Heer Ranjha was a little boring in that sense. Nautanki, there will be extended dialogues, जैसे हम अभी बात कर रहे हैं, right? Then most of the dialogues are also sung. So it is never boring. And there are at least 40 poetical meters. Like, you also have English department, yes. Right? You have those Shakespeare's, right? The sonnets. And also, if you talk about opera, you have arias. Arias is basically our doha chaubulas. It's similar. And each meter is fixed. They have specific matras, specific syllables. And they were sung. So they were written in a year's time, at least. One production will take to write at least a year, right? 1 year. So it is not क्या नौटंकी लगा रखी है, क्या नौटंकी लगा रखी है, वो है. You can say it in a little different way, right? Yes, sir. Because पूरा साल लगता है लिखने में. Coming back to mysticism and love. Now I will introduce Nautanki to you. These were the themes. If we talk about the 19th century in India, 1800s, when Nautanki was on the peak of its height, when it was called Swang,
एक स्वांग का नाम था प्रिंसेस नौटंकी, एक्चुअली में प्रिंसेस नहीं थी, राजकुमारी नौटंकी, राइट? उसका जो हीरो था वो नौटंकी थी, हीरो थी नौटंकी, हैं? हीरोइन ना, हीरोइन क्या होती है? जनरली डिपेंडेंट होती है ना हीरो पे। इस वाले स्वांग में हीरो नौटंकी है। She's a protagonist who actually saves her lover. So it was very women-centric swang, and it became so popular because the hero's name is Nautanki. So it became, as I was telling the research center students, it became like Xerox, right? We call it Xeroxing rather than saying photocopying. But Xerox is a Japanese, is it Japanese? Japanese brand. It's a company, right? It's not actually action. It is not the phenomena of photocopying. It is just a company, but we call it Xeroxing, right? Like Instagramming. So Nautanki, right? The Nautanki Swang popularly then started to be called as Nautanki. And 19th century में 1800s में, in fact 1800 तो छोड़ दी, गुलफिशान जी ने जिसे बताया, बहुत पहले से हमारे जो, I do not want to use the word composite culture, it sounds so crass, but हमारी जो culture है, why composite? हमारी जो culture है, उसमें हमारे जो सबसे popular themes थे, वो love, और love हमारे यहाँ कभी भी, it has never been only body centered. You know what I'm saying? Because body से जल्दी interest खत्म हो जाता है, it was much deeper. तो खुदा का लव या भगवान का लव, राइट, और अपने महबूब का लव, दोनों मिले जुले हैं। और ये हमें मिस्टिसिज्म ने सिखाया है बहुत पहले से। आई थिंक शी इज टेलिंग यू इन द बुद्धिस्ट टाइम्स, आई थिंक आप बता रहे थे। उसके बाद तंत्र का जो वक्त आया, उसके बाद हमारे योगी जो हैं, गोरखनाथ, नाथपंथी जो हैं, से लेके अब तक संन्यास या तो एकदम एक्सट्रीम होता था, वेयर यू विल लीव एवरीथिंग, लेकिन उसमें कोई रस नहीं था। रस था भक्ति में, सूफी में, बिकॉज आप अपने लवर के थ्रू भी ऊपर वाले से मिल सकते हो, इससे अच्छी क्या बात होगी। So it was a balance of the two that Indians really loved, कि जब आप अपने महबूब का भी बता रहे हैं तो एक्चुअली बोल रहे हैं कि तू मेरा भगवान है ना? So it was easier way to reach the God. तो हमारे यहाँ जब परफॉर्मेंस की बातें करते हैं तो हमेशा परफॉर्मेंस में these are the themes. अभी मैं बात कर रहा था, आपका नाम है फरहत जी से बात कर रहा था कि मैंने बहुत सालों तक हबीब तनवीर के साथ जो आगरा बाजार है उसमें जो फकीरों के गाने गाए, बहुत सारे 50 शो के करीब, उसमें भी जब वो छत्तीसगढ़ी लोक आता है, जो छत्तीसगढ़ी फोक आता है, वो जब हम एक्चुअली नज़ीर अकबराबादी की शायरी भी सुनते थे, उसमें भी हमेशा जो माशूक होता है, जो लव्ड वन होता है, वही तो गॉड से मिलाने वाला होता है। तो अगर मैं अगले पे जाए, ये तो पढ़ ही लिया होगा आपने, अगले पे जाए, हाँ सॉरी, ये थीम्स थी हमारी नौटंकियों की और स्वांगों की, and they all belong to 19th century. And जैसे आप बता रही थी, गुलफिशान जी बता रहे थे कि इंडिया ऑफिस लाइब्रेरी, ब्रिटिश लाइब्रेरी, I found at least 600 नौटंकी books in the British library. मेरे पूर्वजों की भी, मेरे ancestors की भी उन्होंने बचा के रखी है। So I found all these themes, all these narratives in those नौटंकी। अब देखिए शीरी फरहाद, do you think it can be connected to Sufism? Yes, it's a tale connected to Sufism, how we take it, how we receive it. लैला मजनू? Yes. Definitely. अच्छा तुम्हें क्यों बहुत अच्छा कोई पीरियड बदल गया है क्या? सब बच्चे बड़े अव्यवस्थित से हो गए। हाँ, मतलब जो जाना चाहता है जा सकता है, लेकिन जो रहना चाहता है रह सकता है। मुझे बताओ, आप लोग बताओ, लैला मजनू कैसे मिस्टिसिज्म से कनेक्टेड है? अरे वो तो एक्सपर्ट हैं, वो तो मैं तो बच्चों से पूछ रहा था। नहीं, मतलब मैं बच्चों से पूछ रहा था, आपने बोला ना लैला मजनू जो है, हाउ डू यू थिंक इट इज कनेक्टेड टू द लव ऑफ गॉड? ये तो पॉपुलर कल्चर में बहुत पॉपुलर है ना लैला मजनू।
सबने सुना है ना? Why would you say that? मतलब why you think it is Sufi? Sir, हाँ, sir, it is like often seen the path and the suffering that you follow to meet the lover is actually the suffering that a human faces to reach the lover. So that's why the journey becomes so important and the longing also becomes so important. It tells you about the depth of your devotion and the love. If और दूसरी that बात है makes sense. जो लव का पूरा हमारा सोच बना हुआ वो यही है कि जब तक सफरिंग नहीं होगी वो असली लव भी नहीं है कई मामलों में, राइट? It's a short-lived love is not love, right? It has to be long and full of suffering. So लैला मजनू की कहानी, शीरी फरहात की कहानी, and you must have not heard about these. Have you ever heard of this story? सौदागर और स्याहपोश और पाक मोहब्बत. Have you ever heard of this? जी जी, मृगावती और पद्मावती तो सुना होगा. पद्मावती में तो अपने कौन थे वो? रणवीर सिंह. देखो आपने बोली, but you are right. What are you saying? बोलिए, आप बता रही थी. हाँ, तो मृगावती उत्पन्न ने लिखी है वो जो पोएट है, और पद्मावत जायसी ने लिखी है, राइट? Nal Damayanti also we've heard. नल दमयंती है ना? हाँ, ये महाभारत में कहानी आती है. Yes, sir. Yes, And it is sir. also about Yes, sir. sufferings Yes, sir. in love, right? All these can be called as Sufi. And again, it is not just this is kind of a Hindu-Muslim kind of a thing. They are common in all cultures, right? तो पद्मावत बहुत पॉपुलर है. ब्रज में, मथुरा में, जहाँ पे कृष्ण भक्ति ज्यादा है, वहाँ पे घर घर में आपको पद्मावत की बोलने वाले मिल जाएंगे, कोटेशन देने वाले मिल जाएंगे. द सेम थिंग, लैला मजनू की स्टोरी बहुत मशहूर है, राइट? इसका कोई हमारे पास ना तो अपभ्रंश में ना बोलियों में या ब्रज में ऐसा तो नहीं मिलता है, लेकिन लैला मजनू पे नौटंकी जरूर है. शीरी फरहात पे नौटंकी है. सौदागर वो स्याहपोश, इसमें भी लव है, एक राजकुमारी का लव जो है एक मर्चेंट से हो जाता है और वो रोज रात को कुरान पढ़ाने आता है उसको. तो दोनों में प्यार हो जाता है, लेकिन मर्चेंट कहता है, I will never touch you because ये पाक मोहब्बत है, उर्फ पाक मोहब्बत. वो पकड़ा जाता है, बादशाह उसको पकड़ लेता है, वो सोचता है चोर है, तो रोज यहाँ पे आता है महलों में. और जब उसको फांसी लगने वाली होती है तो एक स्याहपोश यानी कि काले कपड़े पहना हुआ एक व्यक्ति आता है जो उसको छुड़ा लेता है. और वो छुड़ाने वाला कौन है? प्रिंसेस. तो ठान ली प्रिंसेस ने, उसको छुड़ा लिया. तो बादशाह इतना इम्प्रेस हुआ इस बातों से कि वो जो मर्चेंट का लड़का था उसको गोद ले लेता है, एंड ही बिकम्स द नेक्स्ट किंग ऑफ रूम. रूम माने इराक, राइट? Byzantine, right? Exactly, that area. Yes. So उसको इनाम मिलता है और वो जो है राजा बनता है और ये उसकी वाइफ. पाक मोहब्बत तो ऐसी बात नहीं है. पाक मोहब्बत से प्लेटोनिक लव से भी कुछ अच्छा हो सकता है. थिंग टू रिमेम्बर. इंदर हरण, ये अलाउद्दीन की कहानी है. दिस इज फुल ऑफ फैंटेसी. इसमें भी लड़की जो है प्रोटैगनिस्ट है, जो कि एक प्रिंस को किडनैप करके ले जाती है क्योंकि उसको पसंद आ गया है, और रात को उसको जो आदमी बना देती है और दिन में उसको तोता बना देती है, तो ताकि देखे ना लोग. हाँ, वेरी इंटरेस्टिंग है ना. वैसे ज्यादा हो गया. नल दमयंती बताया दिया है ना. हाँ, पद्मावत और मृगावती और yogic influences. Now in India, even though yogis are called the most severe ones that who have this, like, you know, all the tapasyas and everything, yogis' stories are also very much have been interpreted by masses as kind of mystique. Particularly the chamatkars and the spectacles and magic of Guru Gorakhnath, है ना? So Guru Gorakhnath was supposed to be the incarnation of Shiv, and in many tales, शिव जब ऊपर से जा रहे, शिव और पार्वती ट्रेवल करते रहते हैं और नीचे जब मृत्यु लोक में देखते हैं, धरती पे देखते हैं कि कोई भी दुख पा रहा होता है, तो उसको पार्वती कहती हैं कि शिव जी आप ठीक कर दो. एंड इट्स वेरी मेल फीमेल काइंड ऑफ थिंग. शिव जी कहते हैं अरे तू तो ऐसे ही पीछे पड़ी रहती है हमेशा. और पार्वती कहते हैं ना आपको तो ठीक करना पड़ेगा. तो ऐसे
Gorakhnath, who's considered as the incarnation of Shiv, his tales are also interpreted in a very mystique way. It has nothing to do with the karma kant of sannyas, but in the folk tales, Gorakhnath can do anything. And Nautanki Gopi Chand Bhartari, it's the most famous Nautanki, most popular Nautanki of the 19th century. This was about the renunciation of the world by Gopi Chand. Gopi Chand was the king sometime placed in Malwa region, where Raja Bhoj and Vikramaditya were there. And sometimes he's placed in Bengal. I don't know where he is, right? Where he was. But Gopi Chand is also connected to Bhartari, and Bhartari, as you know, is a famous ascetic or saint in India. Bhartari Shatak is one of the Shatak, and 100 shloks of Bhartari, which are Niti shloks, which means that how to behave in this world. Gopi Chand is considered as his nephew. Now, the Gopi Chand was a prince, a king, newly appointed king, only 18 or 19 years old, when his mother sees a dream in which Gorakhnath is telling her that Gopi Chand should become a yogi. अब इनके बीच में बहुत सारे डायलॉग्स होते हैं माँ के बीच में और गोपी चंद के बीच में. माँ कहती है कि तुझे मॉडल बनना है इसलिए तुझे योगी बनना पड़ेगा, गोरखनाथ का शिष्य. गोपी चंद कहता है पता है मेरी कितनी रानियां हैं, मैं छोड़ के चला जाऊं सब कुछ. It is so much fun. Huh? I'm only 18 years old, I'm not going to go. And mother says, I'm telling you this. And he says, अगर माँ ने कह दिया तो कह दिया. Then he goes. And then there is a big kind of a conversation between his Rani and him, in which Rani says, कि तुम हमें किस पे छोड़े जाते हो? हाँ? हमसे क्यों शादी करी थी अगर तुम्हें योग रखना था तो? और वो बहुत प्यार करती है उसको. गोपी चंद कहता है तेरे पास तो बहुत सारे डायमंड्स हैं, सारे खजाना है, you just enjoy the wealth. Were you worried about me? And she says, no, I cannot enjoy them without you. Now the thing is that our, whatever you call it, folk, even though it was not folk, because we were doing this in Bali Shah's Darbar, right, in 19th century, right? But whatever you call it, do you think the popular traditions, how they pull yoga and sannyas with love, right? So we are talking about love here. उसकी जो queen है, उससे कितना प्यार करती है. उधर गोपी चंद कह रहा है कि मैं जो है संन्यास रखूंगा. So you see that men are obsessed with sannyas usually. Women are obsessed with love in these kahaniya, but I see it in a different way. That women's sannyas is when they are renouncing their lover. Is that not a sannyas? If you are loyal, which is unheard of today. But if you are loyal, it's like a sannyas, right? So when people say that आदमी तो हमेशा सन्यासी बनते थे, औरतें प्यार करती थी, that's kind of not really true, because Gopi Chand is also going into sannyas because he loves his mother. So that's how the popular culture will draw different kind of influences, whether sannyas, whether Sufism, whether bhakti, whether love. And love is not a separate entity at all. जैसे खुसरो तो प्यार की बातें करते हैं ना, बहुत मतलब कितना प्यार भरा पड़ा है जब वो लिखते हैं तो, right? So they are not very separate. So when I say love, mysticism, what else did I say that? What is it, bhakti? Yoga. They are together. Thank you. So बस I think I want to share some of the title pages, right? And then maybe if you allow me, गुनगुना के बता दूं तुम्हें दोस्तों? Yes, sir. मतलब ज़्यादा you won't be like embarrassed about it? Sure? Yes. जिसे मैंने बोल दिया. देखो संगीत लैले मजनू. This is 1879. ऊपर 79 लिखा हुआ ना? Can you see the 79 written by a pen? Yes. This is in British library. तो ये British library के वो लोग हमेशा लिख देते थे. जब भी वो British Museum जाती थी, and then from British Museum, British Library got them. Which region is this from? This is all northern India. So near Haryana.
संगीत लैले मजनू। अब इसमें मजनू तो समझ में आता है, राइट? मजनू बिल्कुल कंकाल हो गया है लैला के प्यार में, राइट? इज लाइक ए स्केलेटन। वो लैला कैसी है? So I was presenting this in London and they're saying now this is new love. I said yeah, it could be new love. But the thing is, लैला इसमें ना भेस बदल के गई है मजनू से मिलने, because she was not allowed, right? She was not allowed. तो इसमें उसने उसका सौदागर गया, उसका लड़ने वाले का पता नहीं कौन है ये, इसका भेस भरा है और रेगिस्तान में मजनू से मिलने गई है. You can see this, right? मतबा शंभू दयाल वह अंजाम मैनेजर अहमद हर्ष के छापा गया बहुत शुद्ध करके. ये लिथोग्राफ है ना? So this is लैला मजनू. Then ये वो है सांगी सौदागर व स्याहपोश का, वो उसको कुरान पढ़ा रहा है. Can you see that? Yes. Yes, sir. और रात में पकड़ा जाता है. वो कमंद समझते हो आप? रस्सी डाल के खिड़की से चढ़ता है रोज. एक दिन पकड़ा जाता है. It's a wonderful love story. If our Bollywood can give me some money, we can do real films. अच्छा, इसको तो मैं बाद में आऊँगा. This is गोपी चंद भरथरी. तो इसमें रानियां जो हैं, वो राजा भी है, लेकिन वो उसके हाथ में वो भी लगा हुआ है. जानते हो तुम? Right? हाँ, क्या है वो? वीणा किस्म की है वो. हाँ, वीणा इधर यूं लगी हुई है और एक और पीछे की चीज है उसके पास, है ना? You're right. ये ऐसे तो वीणा पकड़ी हुई है. हाँ, वो रुद्र वीणा है, दोनों तरफ से है शायद, उसमें तंबूरा. हाँ, ये सरस्वती वीणा. But anyway, that is गोपी चंद talking to his ranis. In fact, गोरखनाथ जिसके शिष्य बने, उनकी कंडीशन ये थी कि जब तुम माँ कह के उससे भिक्षा लाओगे अपनी पत्नी से, तुम्हारी loved one है. पत्नी is not important है, the loved one, right? जिससे आप प्यार करते हो, उस रानी से जब माँ कह के भिक्षा लाओगे, then I will consider you as a sannyasi. So the tragedy of love. ऐसी फिल्में बनानी चाहिए, क्यों? They can make Harry Potter. We can't make our fantasy films. We should, right? तो गोपीचंद भरथरी, and this was published. You can see the seal, like Northwest government की seal है, 1868, Northwest Frontier. हमारे Frontier Mail भी चलती थी, by the way, right? Do you remember Frontier Mail? So Northwest Frontier included not only Punjab, Himachal Pradesh, also Haryana and Delhi. So Delhi was also in Punjab and part of the Northwest Frontier overall. तो ये 1868 में उस म्यूजियम में पहुंची और ये पब्लिश हुई है 1867. नीचे हिंदी में लिखा हुआ है. If you can see the हिंदी numbers, 1867 ईस्वी लिखा है. हाँ, ये तो बिल्कुल ही खराब हो गया, इसमें आया नहीं. बट ये गोपीचंद भरथरी मुझे मिली, इसके बारे में मैंने सुना बहुत था, वृंदावन में लिखी हुई. इसमें जिसने गोपीचंद का रोल किया था जब ये हुई थी 1870s में, तो उस गोपीचंद जो एक्टर था, उसके बाद वो संसार छोड़ के चला गया. मतलब he took the sannyas. तो हम लोग जब परफॉर्म करते थे, our performance tradition was so full of ras, and it's because of full of ras, because of full of music and poetry, it had such an impact that people would actually do that. And he was not the only one. Even विष्णुपंत पागनेस, जिन्होंने ये संत तुकाराम का पार्ट किया था प्रभात की फिल्म में, वी शांताराम और ये सब लोग जो थे, he renounced the world after Tukaram. This can only happen in Indian traditions because we emphasize love and we emphasize ras, which means music is integrated with poetry to create a certain kind of magic. And there is no fourth wall. Right? Fourth wall. I hate these terms, but do you know what fourth wall is? Yes, sir. What is that? So the fourth wall is usually in the proscenium kind of theatre where there is a screen between the actor and the audience. मतलब virtual screen. Yes. जो होती नहीं है, बस Yes. हम लोग ऐसे बैठे रहते हैं जैसे कि हम इससे बाहर हैं. Yes. Right? और वो वहाँ पर हैं, वो अलग हैं. और हमारी traditions में कोई भी बाहर नहीं है. Yes.
है ना, सब मिले जुले हैं। इसका मतलब ये नहीं है कि परफॉर्मेंस की इज्जत नहीं करते हैं या चुप नहीं हो सकते हैं जब परफॉर्मेंस गाते हैं, बट वी आर पार्ट ऑफ इट, है ना। तो इस वजह से वो जो असर है वो दोगुना तिगुना हो जाता है, बिकॉज वी थिंक इट इज रियल, इट इज नॉट अ वर्चुअल वर्ल्ड, राइट। तो रामलीला में इतने भक्ति से जब वो बनते हैं, स्वरूप बनते हैं, जो राम बन रहा होता है तो उसके चरणों पे लेट जाते हैं लोग, जबकि असली पता है सारा बहुत ही कमीना किस्म का आदमी है, राइट। तो अब मैं इसको खत्म करके वो दो गुनगुना के बता देता हूँ। ओके सर। सूफी सूफी है, अरे ये भी सूफी है। Just give us 2 minutes, huh? नहीं ये वाला, हाँ ये वाला। Yes. Acha. So this is, I want to sing few lines from that lithograph, right? This is Gopi Chand, 1867. Right? There is another myth. The Nautanki is folk, and God knows what folk is, by the way. Do you know what folk is? People use this term so loosely, right? That nobody knows what folk is. Everything is folk, right? But at the same time, if folk is considered as a village affair, Nautanki was not just a village affair. Nautanki was the predominant form of entertainment of northern India, or Swang, as it was called. So it was popular in, while the Shah's Darbar. It was popular with the Delhi Seths. Chandni Chowk mein bahut swang hote the, with Agra, Meerut, and also villages. तो बॉलीवुड क्या खाली शहर वाले देखते हैं? No, sir. तो गांव वाले भी देखते हैं और शहर वाले भी देखते हैं. एंड बॉलीवुड में ये होता है कि अरे यार ये तो बहुत इंटेलेक्चुअल फिल्म है यार, कमाल है यार, वो अलग बात है. वी हैव वेरिएशंस, राइट, एंड वी हैव डेडिकेटेड ऑडियंसेस, राइट. बट सेम थिंग विद swangs. There were different kind of swangs. So you can see the swangs dialogue were in rags,
And when they say that oh classical music is different and Swang-Nautanki is different, that is entirely different. तो यहाँ पे रानी जो है रतन कुंवर, वही जो सबसे प्यारी रानी है, जिससे वो माँ कह के भिक्षा मांगेगा, वो गा रही है. तो क्या है वो, पिया तो है जान न दूंगी. देखने में ऐसा लगा लिथोग्राफ पता नहीं कहाँ का है, पता नहीं कौन सी जगह का, क्या है ये. बट इट्स वेरी सिंपल इफ यू रीड इट, राइट. पिया तो है जान न दूंगी, बैठो मन समझाए. ये टेक है यानी स्थाई है, रिपीट होती है. तुम जाओ हम किस पे छोड़ी, रोवत नैन बिहाए. हमारी तो आंखें खराब हो गई रो रो के. 16 सनार बिसारे चले हो, ठाड़े हो भस्म रमाए. बट इट्स वेरी सरकास्टिक आल्सो कि इतने श्रृंगार और रसिक और इन सब चीजों को छोड़ के तुम भस्म लगा के खड़े हुए मेरे सामने, ऐसा मन आता है कि बस. तो मैं इसको ना पहली लाइन गाता हूँ और 3-4 और लाइन गाता हूँ. तो pardon me if I'm not able to sing well, थोड़ा सा तो गर्मी है यहाँ पर थोड़ी सी. पिया तो है जान न दूंगी, बिहा गए. पिया तो है जान न दूंगी, बैठो मन समझाए. बैठो मन समझाए. पिया तो है जान न दूंगी. और ये मुझे तीसरी लाइन ज्यादा अच्छी लगती है. धड़क धड़क मेरा करत कलेजा, धड़क धड़क मेरा करत कलेजा. नैन रहे झरलाए, हाँ नैन रहे झरलाए. सोच समझ घर बैठ रहोगे, सोच समझ घर बैठ रहोगे. क्या है? सेवा करें बना. पिया तो है जान न दूंगी. और उसके बाद तो देखिए और लक्ष्मण राम सुमिर नर, लक्ष्मण राम सुमिर गुण गावे, दीजे दर्श दिखाए. इसमें डबल मीनिंग है इसका. इसके बाद मैं खत्म करूंगा. लक्ष्मण राम सुमिर गुण गावे. लक्ष्मण जो है राम जी के गुण गाते हैं और दीजे दर्श दिखाए. वो ये कह रहा है राम जी आप मुझे दर्श दे. इष्ट दे, वो कौन है? लक्ष्मण कौन है? लक्ष्मण इज द पोएट. तो हमारे इंडिया में हमेशा पोएट की छाप होती थी. जब वो पोएट्री खत्म होती है ना, ऐसे ही गजलों में भी होता है ना. हाँ, तो हमारे पूरे कल्चर में जब वो पोएट्री खत्म होती है तब ये होता है. और इसका ये जवाब जरा 2 लाइन और ऊपर करना. आई प्रॉमिस यू आई एम गोइंग अवे. ये गोपीचंद जो गा रहा है काफी में गा रहा है. काफी मतलब होली, ठीक है. आजकल तो काफी बोलते हैं, पहले होली बोलते थे. अभी होली का ही टाइम है ना. इसकी 2 लाइन देखो. हाँ, अब वो जवाब दे रहा है उसको, अपनी महबूबा को. वाइफ तो बाद में, रतन कुंवर है. नारी अब ख्याल परे मत मोरे, नारी अब ख्याल परे. मेरे दिमाग में ये ख्याल आ गया है. मोहे जाना गुरुन के डेरे, नारी ओ वुमन. हाँ, अब ख्याल परे. मोहे जाना गुरुन के डेरे, नारी अब ख्याल परे. इसमें दीपचंदी है. बैठी राज करो मेलन में, माल खजाने तेरे. है ना, तुम्हारे पास बहुत है. हम कर मन में लिखी है फकीरी, हम कर मन में लिखी है फकीरी. तो या को कौन निबेरे,
नारी अब ख्याल परो वापस ऊपर बैठा That was a wonderful enthralling, not just a presentation, it was a performance. Yes. And very, very informative. Thank you for enlightening us about a topic about which I personally knew nothing. So thank you so much. We are going to be having the questions later.